Okay. again, like I came across some new problems, so I was like, Ah, yeah, okay, okay. So let us start. So what I'll do first, I'll create a new folder. So this is VS Code where already some project is open. So what you can do, you can create a new folder by going to your file explorer. ऐसे फाइल एक्सप्लोरर में आके कहीं पे नया प्रोजेक्ट बना लेना. Like this, suppose on desktop I'm creating. So I will do new folder. I will name it Swiggy. Swiggy name कर दिया मैंने. So now we need to open this project folder in our VS Code. VS Code में always project folder मतलब ओपन करके हम लोग काम करते हैं बिकॉज हम लोग को फाइल क्रिएशन, फोल्डर क्रिएशन और जो जो फाइल है ना एक फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर सारा मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाता है इस साइड नेविगेशन पैनल में. दैट्स व्हाई व्हाट वी डू, इंस्टेड ऑफ opening file, we open folder in VS Code. So now go to desktop wherever you have created the project, select the folder and click this button. Okay, तो हम लोग का फोल्डर ओपन हो गया. आई ट्रस्ट द ऑथर्स, इसको क्लिक कर देना अगर ये प्रॉम्प्ट आ जाता है तो. नाउ दिस फोल्डर इज एम्प्टी. Now the power of VS Code is that you can create folders, files right inside this VS Code. Okay, just you have to first open the folder. अभी देखो मैं index.html फाइल क्रिएट करता हूँ. Index.html. So index.html file is basically the starting file of any website. Okay, it's the main file of any website. Basically the main starting page you can say. Okay, whenever you go to a website, okay, the file whichever loads by default, it is called the index file. उसका default नाम होता है index.html. Okay, so now what we will do, in VS Code, you have now option to generate the HTML template. That shortcut is HTML:5. ठीक है, उसको देने से तुम लोग का क्या मिल जाएगा, ऐसा HTML का टेम्पलेट मिल जाएगा. ओके, डिफॉल्ट टेम्पलेट. इसमें टाइटल है, टाइटल हम लोग दे सकते हैं स्विगी, लाइक दिस. ओके, नाउ इन द बॉडी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ. इनसाइड बॉडी हम लोग को अभी स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का क्या है, एक div एलिमेंट है. इनसाइड दिस div वी हैव अ ग्रिड सिस्टम. सो फर्स्ट बूटस्ट्रैप को भी इंक्लूड करना पड़ेगा. सो वी विल सर्च बूटस्ट्रैप 5. ठीक है, bootstrap 5 we will come here and then we will copy the css code. We don't need javascript, तो उसको हम लोग कॉपी नहीं करेंगे. Simply I will paste here. Okay, इसको मैं फाइल में रैपिंग को एनेबल कर देता हूँ so that I don't have to scroll here. Okay, I will enable the wrapping. So what I will do, view word wrap, I will click this, तो ये wrap हो जाएगा, मतलब नीचे आएगा. Okay, तो we have connected bootstrap. Now we can close this. Now let us start with the grid system. Right, grid system को हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, div class row like this. Okay, then div class equals to, I will use call md. चलो हम लोग 6 ही बनाते हैं. आई थिंक द लेफ्ट साइड वन इज लिटिल बिट लार्जर स्लाइटली, बट स्टिल वी विल मेक इट 6 फॉर नाउ सो दैट नो कंफ्यूजन इंक्रीजेस फर्दर. तो कॉलम 6 एंड कॉलम 6 बने. देखो मैंने इसमें क्या लगाया, md6 लगाया, व्हिच मींस स्टार्टिंग फ्रॉम डेस्कटॉप स्क्रीन साइजेस एंड लार्जर इट शुड टेक 6 कॉलम्स. मतलब बाय डिफॉल्ट जो इससे छोटा होगा ना वो बाय डिफॉल्ट 12 ले लेगा. ओके, whenever you don't specify the size of a column, by default it takes 12 columns. ठीक है, as you know div is like a block element, it takes full width, right? तो by default 12 ले लेगा. So we don't have to specify call 12 like this, although you can specify call 12 if you want. So if you specify तो ऐसा होगा, but if you don't specify by default it will be 12. If you want something different like column 6, column 8, then you can specify like this. People, did you get what I am telling? yes, Okay, so starting from medium screen sizes, basically small laptops, small desktops, it will start taking 6 columns. So below that it will take 12 columns because that's how responsive design we want it to be. अभी 6 लिया. Now on the right side we have an image, on the left side we have this logo. Simply we can copy this logo image. I think this is SVG, we cannot copy. So what I will do, I will search for Swiggy logo and I'll download from Google. I'll go to images, Swiggy logo. I'll try to find a similar one like this. So this one. Okay, I think this should be fine. या फिर कुछ transparent है क्या? Okay, let us use this one. So right click, I will save image as swiggy.jpg. I have to slightly edit this image. Okay, let me quickly open up Photoshop. I have to make it transparent basically. Let me open Photoshop CS2.
इसका भी थोड़ा बेसिक्स को कर लेना पड़ेगा फोटोशॉप का, इट इज इंपॉर्टेंट. We want to open this logo. Now what I want to do, I want to slightly crop this image. I want to crop this image slightly. So इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ इधर तक. This much is fine. I'll click image. इसमें इधर crop है option, crop. ये crop हो गया. Now I also want to make this transparent. So what I'll do, I will select this white part. Okay. ये white part को select करके मैं इसको delete कर देता हूँ background. So it will be transparent image. नहीं तो white color का ये है background. Now I will save this. और एक चीज याद रखना पड़ता है कि ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ना बैकग्राउंड हम लोग को पीएनजी में सेव करना पड़ता है. पीएनजी दिस वन. आई विल से दिस लोगो. Okay, now it has been saved. So we edited according to our need. So all the time it's not possible that you will get the image that you need exactly. So we have to edit sometimes. Okay. So this is our required logo now. Now what I want to do, I want to organize all the images inside a folder. So I will make a folder images and I'll drag this and drop here. Okay. So always practice with VS Code from now so that you can get through all this and become familiar with them. Okay. अभी images के अंदर मेरे पास logo.png है. ठीक है. सो टू इंसर्ट दिस इमेज व्हाट आई विल डू, अभी मैं फिर से एक div बनाऊंगा. ओके. इधर मैं एक हेडर सेक्शन बनाऊंगा. बेसिकली दिस लॉगिन साइन अप बटन एंड द लोगो ऑन द लेफ्ट साइड दे आर इनसाइड वन div element. Okay, we can give some class say header. Okay, so why I'm putting it inside a div element, I'm telling in a second, but first let me add logo on the left side. So I will say logo.png, but remember index.html है हम लोग का source file and our destination file which we are trying to connect is logo.png, right? ये वाला. But both of them are not in the same location. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, we have to specify the name of the folder that it is inside, which is our images folder. Then you have to put a slash फिर logo.png. Okay, now the image will come. So let us open the file. Now अभी देखो इसको फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग को फाइल एक्सप्लोरर में जाना पड़ेगा, इसको ढूंढना पड़ेगा, राइट? Even though it's in the desktop, but if sometimes it's not in desktop, then you have to search a lot, then you will find the file, then you can double click and open in browser. But in VS Code, what you can do, you can right click here and you can click this button, reveal in file explorer. So you have an option to open this in file explorer, this path. तो ये हम लोग का डायरेक्टली मिल गया, जो भी लोकेशन में ये फाइल है वो डायरेक्टली ओपन हो गया. तो वी कैन ओपन इन गूगल क्रोम नाउ. ठीक है. नाउ दिस इज आवर लोगो. Next what I want to do, I want to make the logo size smaller, it's too big. ठीक है. So I'll also put one class here, class equals to logo, like this. ठीक है. तो इधर column 6 already बनाया हुआ है, class logo दिया है. Now to make this size smaller, I want to write CSS now. Now अभी CSS को मैं same file में लिखना नहीं चाहता because it's not good practice. Whenever you create a real website, you don't want to write all the CSS code for a page here. So you basically want to extract. तो हम लोग separate file create करेंगे. Okay, basically style.css. Now I don't want to put this CSS files here. Sometimes I'll have a long list of CSS files क्योंकि 2 3 4 CSS फाइल भी possible हो सकता है for a practical website. So we will create one more folder, say styles. Okay, then we will organize this CSS files inside this styles folder. Okay, इसके अंदर मैंने डाल दिया है. I have dragged and dropped here. I can also give different name here. Instead of style, I can say homepage CSS. Okay, तो इधर हम लोग का आएगा. Now we have to link this external CSS file. So we will use the link tag, link href equals to, इधर हम लोग को path देना पड़ेगा. Now since it's not in the same folder, we have to first specify the folder name which is styles, then we have the file name homepage.css. अभी हम लोग को rel equals to style sheet, this is very important. If you don't give this, the CSS styling will not be applied. Okay, this is very important, rel equals to style sheet. अभी हम लोग का CSS लिंक हो गया. Now we can use the class which we gave to the image logo. फिर इधर मैं width लगा देता हूँ. As you know, height auto adjust हो जाएगा. So width I'll give around 50 pixels. बहुत छोटा हो गया, 150 pixels, this much. ठीक है. So this is our logo on the left side. We can make it slightly more larger by making it 180 pixels. Okay, all right. Now the next step is to add these buttons, login and sign up button, correct? So let us add also buttons here inside this header. तो हम लोग button login फिर button sign up. It can also be ahref tag. Okay, does not matter. बटन को हम लोग जावास्क्रिप्ट के साथ रन कर सकते हैं और ahref में डायरेक्टली तुम लिंक लगा सकते हो. Now this side we have our buttons. In a while we will see how you can make them side by side. You have to use flexbox. Okay, you have to use justify content space between. First let us try to bring this image on the right side. अभी देखो. Now one thing I want to tell, uh, Vipul, how did you get this image on the right side? Uh, I just added it in the column. I made a column, right? In terms of
I mean, When I made how did you I copy? I broke mean, that one. how did you copy the image actually? Oh, I put some other image. Although I Okay, changed the okay, image because that okay, was not like uh, similar. It was like a landscape thing. okay, okay. So what I'm trying to tell that some of the image you can right click and you can copy image address. Okay, you can also open a new tab. You can click these buttons on desktop, copy image address to copy this same link, or you can save image like this. You can save the image locally to your desktop place. But some of the image you cannot copy. If you right click, you'll find no copy options. So why? So some of the image you can copy like this, but some of the images like this one you cannot copy. So we don't have any option to. We can either take screenshot or the other option will be inspect this image. Okay, you have to inspect this image. Basically, when you click inspect, you can see the code here that how is this image appearing. You can check out. So if we check properly, we will find that इसमें एक्चुअली बैकग्राउंड इमेज यूज हो रहा है ओके तो जब बैकग्राउंड इमेज यूज हो रहा है मतलब इसमें इमेज टैग नहीं है ओके देयर इज नो इमेज टैग राइट हियर दे आर यूजिंग बैकग्राउंड इमेज टू शो द इमेज on the div element. There is no image tag. They are using background image. So as you know, there are two methods. You can either use background image or image tag. In case of image tag, you can copy image address and open a new tab. But whenever the image has been created using background image, you cannot copy the link address. So you have to click inspect. Then you will find the code. And then down there, if you check, there will be some CSS code where it will be written background image. From there, you will have to copy the link. Okay. या फिर हम लोग लिंक को इधर क्लिक भी कर सकते हैं. If we click, now you can see the images right here. Okay. Now what I want to do, I don't want to copy this link. I want to save this image locally. So I will now right click. Now you can right click, copy image address. You can do whatever you want. Okay. First you have to get access to the image like this. तो अभी हम लोग save image करेंगे. Now again I'll go to Swiggy. Images folder में save करूंगा मैं. I will say banner. Okay. So let us go to our VS Code again. We can say banner.webp and logo.png. These two images have been organized inside the image folder. अभी हम लोग को कहाँ लगाना है इधर div element में. Now let us try also by doing background image technique. Okay. तो हम लोग भी background image का technique use करके try करते हैं image को create करने के लिए. So I will give some class here. Say image banner. तो इस class को हम लोग use करते हैं CSS में dot image banner. So I will say background image. So when I use this background image property, I will be able to display the image inside this div element. So when I use background image, I don't have to use any kind of image tags. Okay. So I will say URL. This is the syntax of background image you have to memorize. First you write background image, then you have to write URL. Inside this, between double quotes or single quotes, you have to specify the link of the image. Okay. You have to specify this banner.webp. Now the problem is you cannot set banner.webp directly. Why? Because it is not in the same location. तो इधर क्या आएगा कोई बता पाएगा हृदय what will come here, what will be the link relative URL. इधर relative URL क्या आएगा देखो this CSS file is inside this ইয়াতে লিংকটো কেনেকৈ দিবা ইটো ইমেজেছ ফোল্ডাৰত আছে এণ্ড CSS টো আমাৰ ষ্টাইল ফোল্ডাৰত আছে হা এনেকুৱা ইমেজেছ স্লেছ এনেকুৱা নেকি yeah Vipul what will be the URL can you say Should be I think dot slash images slash yeah yeah banner. yeah those slash images so let me explain so if I open this in file explorer तो देखो हम लोग का सोर्स फाइल कहाँ पे है इधर है homepage.css so this is our file तो हम लोग को अगर इमेज को एक्सेस करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा पहले एक स्टेप बाहर जाना पड़ेगा तो लेट मी शो यू हम लोग कहाँ पे हैं इधर जस्ट इधर है हाँ होम पेज सीएसएस तो इमेज को एक्सेस करना है इधर से which means from this file so from this file if you want to reference the image link you have to go outside one step okay इधर हम लोग को एक बैक क्लिक करना पड़ेगा which means डॉट डॉट हम लोग को डॉट डॉट स्लैश देना पड़ेगा इसके बाद हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा इमेजेस फोल्डर में जाना पड़ेगा इसको फिर इसके अंदर हम लोग इमेज को एक्सेस कर पाएंगे ओके which means first we have to go outside this folder using dot dot slash then we have to go inside the images folder then we can access the image link okay
So this is called relative URL. It depends on the source file and the destination file. Okay, कौन सा मतलब source file कहाँ पे है, destination कहाँ पे है, उस उधर depend करेगा. So it's basically related, इसलिए इसको relative URL बोलते हैं. हाँ, it's kind of relation you have to establish from this file to that file using this link. ठीक है. When we were in index.html, हम लोग का क्या था relation? We simply had to go images folder, then we found the logo. But since this time we are inside some other folder, we have to go outside that folder one step using dot slash. Then we can access images, then slash. Slash means it goes inside that folder. Okay, basically enters the folder when you put a slash. So it is বুঝি পালা রে this one. Okay. Confusion আছে নেকি এতিয়া? অলপ अच्छा अच्छा ठीक है. अभी इसको हम लोग क्लोज करते हैं. नाउ लेट अस चेक कैसा आ रहा है इमेज. अभी देखो इमेज सिर्फ हाफ ही आ रहा है, आधा ही आ रहा है. सो ओनली दिस मच इज कमिंग. So what we can do, we can give some height, we can give some fixed height for now. We can say height 100 viewport height, or we can say 80 viewport height. So what is VH? VH means the viewport height. It means whatever browser height is, out of that you are taking 80% of the browser height. Okay, the window height. मतलब इसके अंदर जो white color का part render हो रहा है उसका 80% ले लेगा. So we are giving 80 VH. तो अभी इमेज हम लोग का इधर तक आ रहा है. लेट मी ट्राई इट 90 VH इधर तक. नाउ द थिंग इज इमेज हम लोग का ऐसा नहीं आ रहा है. इट इज कमिंग लाइक दिस. इट्स कमिंग ओवरसाइज्ड. बेसिकली हम लोग का जितना बाउंड्री है उससे ज्यादा जा रहा है. सो वी हैव वन न्यू प्रॉपर्टी कॉल्ड बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी. Okay, background size property. So in background size you have certain values. You can specify size in percentage also. So I can say background size 100%, which means it will be this much. It will not go beyond that size. Okay, I can say 200%, which means double the size. तो ऐसा होगा. I can also say 50%. 50% देने से क्या होगा, मतलब जितना अवेलेबल साइज है उससे छोटा होगा और रिपीट होगा. दैट्स द प्रॉब्लम व्हेन यू गिव साइज स्मॉलर. 70% देने से ऐसा होगा. सो ऑलवेज द इमेज रिपीट्स टू फिल अप द अवेलेबल स्पेस. So if you want to adjust, you can say 110% or 100% maybe. Sometimes 100% may also be smaller than the available space. Okay. So using this background size property, you can specify how much percentage size you need. Okay, of the original image. ठीक है. Background size property. Because image तो हम लोग का एक tag नहीं है ना. It is not some tag that you can give width and height. It's not like that. So we have added this image using background image property. So to adjust the size of this background image, the property name is background size. अभी राइट साइड में आ गया. Now let us concentrate on the left hand part. You can see login and sign up button. Let us quickly make the layout. ठीक है. तो देखो मैंने इधर क्या दिया है, div class equals to header. So look, this is a div element. तो इसके अंदर हम लोग का लेफ्ट साइड में इमेज चाहिए, राइट साइड में दोनों बटन को चाहिए. तो बेसिकली वी वांट टू मेक दिस अ फ्लेक्स एलिमेंट. ओके, वी वांट टू मेक दिस ए फ्लेक्स एलिमेंट. ठीक है. इसमें दो आइटम्स रहना चाहिए. अभी करेंटली प्रॉब्लम क्या है, वी हैव 3 आइटम्स. So how will you make these 2 items? इधर अभी currently 2 items है. Justify content space between देना पड़ेगा ना. एक साइड एक आइटम लेफ्ट में जाएगा, एक आइटम राइट में जाएगा. लेकिन 3 आइटम होने से क्या होगा, एक आइटम बीच में रहेगा. We don't want that. So how will you make these 3 items into 2 items? How will you convert? Any suggestion? Nesting of divs. Yes. Basically this ये दोनों बटन को हम लोग अगर एक div element के अंदर रख देंगे तो now it's same again. Now there are 2 items, item 1 and item 2. In Flexbox, always there is a relationship between child and parent. So you have to understand the relationship. Now to apply the Flexbox feature of CSS, so we have to now go and add this class, okay, in our CSS file. Basically, class is not image banner, class is header. I added one class. So first you have to establish which one will be the parent and which one will be the child element. Child elements are basically those which are inside this parent element. And these are not flex child, okay. Those items which are grandchildren, great grandchildren, they are not child elements. Child elements are flex child are those which are direct child, okay. They have to be the direct child element. So we have 2 flex items, this one image element and this second one div element. Now to enable the flexbox feature, we have to first write display flex. This is the first step. If you want to use anything related to flexbox, you have to write display flex. Now this header is our flexbox. It has become a flexbox now. Now we can use various properties for alignment. So one of them is justify content, which controls the alignment in the main axis. So by default, you know, main axis हम लोग का क्या होता है, रो होता है. So that's why as soon as you add flex, all items come in same direction like this. एक रो में flow होता है. Now this is our flex direction row. ठीक है. तो अभी ये same direction में आ रहा है. ठीक है. If we give flex direction column, क्या होगा, नीचे जाएगा. Okay. Now the thing is, we want to control the alignment in the main axis.
मतलब रो के केस में x होता है मेन एक्सिस. So we will say justify content. We will say space between. So space between, there are various properties. The default value is flex start. You have flex and center. Justify content, space between. You have space around, space evenly. Okay, you have to check the CSS tricks flexbox documentation to understand. So we justify content हम लोग देंगे space between. When I reload, you can see instantly the both the items they go far apart each other. Okay, side by side हो गया because of giving justify content space between. ठीक है. अभी ये horizontally align नहीं हो रहा है. I mean vertically align नहीं हो रहा है. Okay. How can I verify? If I give some background color black and if I add some padding 20 pixel, you can see ये बटन हम लोग का सेंटर में नहीं आ रहा है. Okay, सेंटर में नहीं आ रहा है. Vertically. To vertically center, you have to use align items property. So align items you have to say center. Align items हम लोग का इधर भी है flex start, flex and center. लेकिन इसमें space between space around वो सब नहीं रहता है. उसमें stretch है. By default stretch होता है align का field loop. So now we have made it center. Okay. Align How items. about justify that thing center, content center or something Justify like that? content center will make it center like this in the main axis like this. Okay. Okay. We don't want this. So basically we want space between. It's called space between. So it tries to maximize the space between each item. Now we can remove this padding which we use for debugging purpose like this. Basically by adding border, as you know, we can check the layout and boundary of each element. Now let us style the button quickly. So we see that okay, let us add general styling for all the buttons. So for all the buttons we don't want any border. So we will add style for all the button elements. So I will make border none to remove all the borders basically, and also I want to make background color transparent for all of them. So transparent background color and background color white, there is a big difference. So see, if I add some background color black, okay, you may think what is the difference between background color transparent and background color white. Okay, so button को मैं color white कर देता हूँ temporarily, और maybe orange कर देता हूँ. So these are our buttons. Okay, now if I add background color white, तो क्या होगा? Button का background color white हो गया like this. So it's white background color. But if I add background color transparent, मतलब उसका कुछ background नहीं होगा. Okay, that's what the meaning is. So we want transparent with by default. So that's why I give this. तो color को कुछ नहीं करना है. So by default I want all the buttons to be transparent. I don't want any background color in them. ठीक है. Now अभी sign up button में हम लोग को black color देना है. So we will specifically add a class here. Okay. So we will add class equals to sign up button. I'll also add class for login button because I think we have to give some padding here. Login button like this. Okay. अभी इधर मैं यूज करता हूँ sign up button comma dot login button. Why I give this? This is called multiple selector. Basically I want to style both these selectors using one style rule. Okay. इधर जो मैं लिखूंगा दोनों में होना चाहिए. So what I want to do, I want to decrease the font size. Font size ठीक है, मैं सारा buttons के लिए थोड़ा decrease कर देता हूँ. Now I will use EM here. Okay, 0.9 EM. Font size में always हम लोग EM यूज करते हैं. Pixels are rarely used. Font size में EM यूज करते हैं. So EM is basically responsive font sizing. 1 EM is basically the default font size of the parent, which is 16 pixel. 1 EM मतलब 16 pixel सोच सकते हो. Okay, but not always the case. Whenever you apply EM, it means the size of the parent element. Okay, अगर parent element का font size 16 pixel है, which happens to be the case in case of body, तो 0.9 EM means 90% of the 16 पिक्सल वैल्यू. ठीक है. अभी साइन अप में हम लोग क्या करेंगे? ओनली फॉर साइन अप बटन मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता हूँ. ठीक है. फिर कलर व्हाइट, कलर व्हाइट हो गया. अभी दोनों बटन में मैं पैडिंग लगाना चाहता हूँ. सो आई विल कम टू दिस अबव सिलेक्टर व्हिच अप्लाइज टू बोथ द सिलेक्टर्स स्टाइलिंग. ओके, पैडिंग 15 पिक्सल ऐसा हो गया. लेकिन इसका विड्थ थोड़ा ज्यादा है, सो पैडिंग हम लोग डिक्रीज करते हैं. नाउ वी विल अप्लाई टू वैल्यूज टू पैडिंग हियर. ठीक है. पैडिंग में मैं दो वैल्यूज लगाऊंगा. पहला वैल्यू क्या समझाता है हम लोग का? टॉप एंड बॉटम समझाता है. दिस इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी. ओके, पैडिंग इज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी. It basically is a shorthand property for padding top, padding left, padding right. Whenever you apply one single value, all sides apply होगा. When you apply two values to padding margin, क्या होगा? पहला value up and down समझाएगा. Okay, up and down. फिर ये वाला left and right padding. If you give four values, it starts from top, right, bottom, left. Okay. If I give four values तो top, right, bottom, left. If I give three values तो बीच वाला हम लोग का left and right समझाएगा, first वाला top समझाएगा, third वाला bottom समझाएगा.
तो यू हैव टू चेक द डॉक्यूमेंटेशन, ओके, फ्रॉम एमडीएन डॉक्स, उसमें शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन है ना। अभी हम लोग पेडिंग लेफ्ट एंड राइट, इसको हम लोग थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं 20 पिक्सल, लेकिन पेडिंग अप एंड डाउन इट शुड बी लेस। तो अभी साइन अप बटन हम लोग का ऐसा दिखाई देगा। वी कुड हैव आल्सो गिवन सम फिक्स विथ 30 पिक्सल लाइक दिस, बट इट इज फाइन नाउ। अभी फॉन्ट वेट को देखो, फॉन्ट वेट थोड़ा बोल्ड है, सो वी कैन से फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, फॉन्ट वेट थोड़ा बोल्ड कर, इधर बोल्ड थोड़ा ज्यादा आ गया है, बट इफ वी अप्लाई सम कस्टम फॉन्ट वी कैन ऐड द सुटेबल एंड एडजस्ट द बोल्डनेस, ओके, यूजिंग वेरियस साइज लाइक 300 400, ऐसा हम लोग बोल्ड को एडजस्ट कर सकते हैं। ये लोगो जो है हम लोग का एक्चुअली थोड़ा बड़ा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इसके अंदर हम लोग का पैडिंग है, राइट, देयर इज सम कंसिस्टेंट पैडिंग, ओके, देयर इज कंसिस्टेंट पैडिंग एक्चुअली। इधर हम लोग को कंटेनर यूज करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज कंटेनर। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो है हम लोग का ये हेडर कॉलम 6 राइट वाला पार्ट, इसके अंदर हम लोग कंटेनर यूज करेंगे, div क्लास इक्वल्स टू कंटेनर लाइक दिस, ओके। इधर मैं रिलोड कर रहा हूँ, तो एज सुन एज आई यूज्ड कंटेनर हियर यू कैन सी क्या हो गया, एज सुन एज आई यूज्ड कंटेनर इधर थोड़ा गैप आ गया लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो मैंने कंटेनर कहाँ पे दिया, बेसिकली ऑन द लेफ्ट साइड, ओके, लेफ्ट हैंड साइड। अभी ऊपर हम लोग का बहुत सारा गैप है कंटेनर के ऊपर, सो व्हाट वी कैन डू, ये जो हेडर है ना, ये जो हेडर क्लास है, वी कैन गिव सम मार्जिन टॉप, ओके। हेडर में हम लोग थोड़ा मार्जिन टॉप दे सकते हैं, सो लेट अस गिव सम मार्जिन टॉप 30 पिक्सल्स, थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। सो यू कैन सी इट कम्स फ्रॉम अबव लाइक दिस, सो यू कैन इंक्रीज द मार्जिन टॉप एज मच एज यू वांट, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू दिस फॉन्ट कुकिंग गन रॉन्ग, ये वाला। ना अभी देखो ये चेंज हो रहा है, राइट, दिस वन यू कैन सी दिस, ये चेंज हो रहा है। एनी आइडिया ये कैसे पॉसिबल है, हाउ विल यू डू दिस चेंजिंग टेक्स्ट, इज इट पॉसिबल यूजिंग तो एचटीएमएल सीएसएस? जावास्क्रिप्ट हाँ, का वो लोग মানে जावास्क्रिप्ट কি বাদ এখানে set টাইম interval, দেখে set timeout to only one time হ'ব, so ইয়াতে তুমি set interval use কৰিব লাগিব। এইটো বেলেগ বেলেগ যে তোমাৰ word আহি আছে, these are inside an array, okay, arrayত আছে, তাৰপিছত এইটো change হৈ আছে, ঠিক আছে, I am showing this in a second. First let us copy this text, let us copy unexpected guest, तो let us come to this HTML। अभी ये header section हम लोग का हो गया है, so let us go down, इसके नीचे हम लोग now see you can write comments, okay, like banner section like this, you can write comments here, HTML comment starting with angle bracket exclamation hyphen hyphen, ठीक है। when you write comment easy होता है समझने में। unexpected guest this I want to put inside h2, okay, और ये नीचे वाला मैं p टैग में डाल दूंगा पैराग्राफ टैग, ठीक है। now you can see it's coming like this, ठीक है। तो अभी क्या करना चाहते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सुटेबल करते हैं ना डिजाइन को, so let's increase some padding, let us give some text, class equals to banner text suppose, let's give some classes, always give meaningful class names, okay, banner text, फिर banner paragraph like this, okay, then copy these class names, come to your css file, then add this, we can also add css comments like this slash star, I will say banner styles star slash, so I will understand that इसके बाद banner styles हम लोग का start होता है, okay। सो बैनर टेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये h2 थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, सो वी वांट टू मेक इट h3, हाँ अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। तो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू इंक्रीज द मार्जिन, okay, I want some good amount of margin. I could have also done with bootstrap my3 my5, so let us try with css itself, because with css also you can do my similar thing by providing two values. I want to say 40 pixels in the top and bottom direction and 0 pixels on the left and right direction, because I don't want anything on the left and right side, because हम लोग by default container use कर रहे हैं and there is already a proper amount of spacing, तो ये ऐसा आ रहा है like this। तो padding bottom, margin bottom we don't want so much, so what we can say margin bottom only 10 pixels like this, ठीक है, so it will come like this। another thing is you want to change this text, correct, इसको तुम change करना चाहते हो, we will do this after a while, first let us do this input element। Vipul, are you getting this till this point, what I'm trying to Yes, do, okay, yes, did you follow the same methodology or some, yes. Somewhat I did though. okay, Like they were adding a lot of designing. I didn't add that much design because like a lot of it was not working and images were also not working. हाँ, But yeah, okay, ठीक है,
Prashant, we basically did this basic designing. We made column 6, column 6. On the right side, we have this image. We use background image. We learned a new property called background size property. So using background size, you can adjust the size of this background image. राइट साइड का इमेज हम लोग ने इमेज टैग यूज नहीं किया है, वी हैव यूज्ड बैकग्राउंड इमेज. लेफ्ट साइड वी हैव फ्लेक्स बॉक्स, justify content space between. This is basically a header element. Inside this we have two buttons on one div element, and on the left side we have image tag. Using background size property, you can control the size of the background. If I give 200%, बड़ा background आएगा. If I give small, like 50%, तो छोटा आएगा. If the size is smaller than the available space, it will repeat, okay? It will automatically repeat. This is the background size property. You can give in percentage. So I can say 100%. You can also give values like cover, contain, okay? You can also give some values like cover, contain. Then they will adjust the values themselves. You can give background size cover, तो जितना space है ना available properly adjust कर लेगा. So you can check out the background size property. Let me just type out background size property. Because as you know, since हम लोग का ये image tag नहीं है, it's a background image. So इधर हम लोग का कुछ image tag नहीं है. So we cannot give width height because there is no solid tag, concrete tag नहीं है. So that's why when you apply background image, to control the size, you have to use background size property. You can specify in percentage. Now let us come to this. ठीक है, फिर हम लोग ने ये div element बनाया है, h2 element, फिर ये paragraph tag. Now below this, okay, we also see that the color is little bit gray. Okay, so let us change the color. We gave some classes already. Banner paragraph, इसमें हम लोग color #555 कर देंगे, which basically is gray color like this. It looks better. So, वो background image is like you gave the URL inside the CSS code, right? Yes, this is how background image works. The URL is specified here. Also इधर देखो हम लोग ने अलग URL use किया, //images like this. This is called relative URL. Why we gave // because we are inside some folder. This time हम लोग ने क्या किया, organize किया है properly folder के अंदर. Inside this we created like this. तो इसके बाहर जाके images folder में जाना पड़ेगा, then we can access this image. So let us come to this styling of this input. तो ये input को style करने के लिए we have to see what are the components inside this. So we can see it is not just one input element. This is basically one div element. Inside this div element you have three things. One is this text input, another is this button, and then lastly this third button here. तो ये तीन हम लोग का अलग अलग items है. This all are inside one div element. So let us create this. But I will create one more HTML comment. I will say input container like this. So I will organize the file into comments like this so that it's easily readable. So I will say div input container class. I'll always give classes so that I can style with CSS /div. इधर हम लोग को three things बनाना है. हाँ, first is input type equals to text. ठीक है, इधर मैं क्लास दूंगा search input class. फिर नेक्स्ट है हम लोग का locate me button. ओके, locate me button सिंपली एक बटन बनाऊंगा, उसमें क्लास दूंगा locate btn. btn means button short form. So these are our custom classes, not bootstrap classes, so that we can apply our own styling, custom styling. So I will say locate me button. फिर lastly हम लोग का फिर से एक बटन बनाना पड़ेगा for this one, find food button. So I will say class equals to find btn like this. Okay, I'll say find food button like this. Now if we reload, we can see these three items are inside this div element, but this div element इधर हम लोग का boundary कितना है दिखाई नहीं दे रहा है because we have not added any styling. So now let us come here. We will say we'll again add CSS comment. Now CSS comment is different from HTML comment. Okay, to add a CSS comment, the comment is something that's not read by the compiler. It does not execute. So we will say search input container. Okay, so here what I will do, search container मैंने नाम दिया था शायद. Let us check. हाँ, input container नाम दिया था. Whatever the name is, it has to match. Okay, so this is our class name. So here I will add a border, 1 pixel solid orange. Okay, because I can see here it's orange color. तो ये हम लोग का orange color का border मिल गया. तो the border मैंने कहा दिया, देखो div element में border दिया है. Okay, इसके बाद हम लोग का दो buttons है, locate btn और find btn. Let us copy both of them. तो we have these two classes. ठीक है, locate btn and find btn. तो locate find btn जो है हम लोग का, इसमें background color क्या है, orange. तो ये orange दे दिया मैंने, orange आ गया like this. Color है किसका, white. Its color is white. Basically the font color is white. ठीक है. Now we can see the font size is not matching and also the padding is not matching. Also ये जो border है, we want to remove this border of input. Input में हम लोग को border नहीं चाहिए. Also we want some placeholder.
बिकॉज इधर कुछ प्लेस होल्डर है, एंटर योर डिलीवरी लोकेशन, सो वी विल एड प्लेस होल्डर टू दिस टेक्स्ट इनपुट, एंटर योर डिलीवरी लोकेशन, ठीक है। सो नाउ वी कैन सी द प्लेस होल्डर। अभी अलाइनमेंट हम लोग कंट्रोल करेंगे, बट बिफोर दैट लेट अस एडजस्ट द पैडिंग, ओके। पैडिंग, तो पैडिंग अभी एडजस्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये तीनों एलिमेंट का पैडिंग को इक्वल करना पड़ेगा, बिकॉज इफ वी जस्ट गिव पैडिंग ऑन दिस बटन, लाइक से वी गिव पैडिंग ओनली ऑन फाइन बटन, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इसमें पैडिंग आ गया लेकिन ये दोनों में पैडिंग नहीं आया है प्रॉपर्ली। तो टू मैच देम व्हाट वी विल डू, ये तीनों के लिए मैं पैडिंग इक्वल इक्वल डाल देता हूँ। हाउ विल आई डू दिस, आई विल सिंपली यूज मल्टीपल सिलेक्टर्स, ओके। ये सारा सिलेक्टर जो है मैं एक जगह में ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है, बाय पुटिंग कमास लाइक दिस। दिस इज मल्टीपल सिलेक्टर, यू कैन सी selector 1, selector 2, selector 3, मतलब ये तीनों selector के लिए this same style rule will be applied, so padding 15 pixel will be applied to all these three elements, ठीक है। 1 minute, इनपुट कंटेनर में नहीं चाहिए हम लोग को, we need in search input, ओके। इनपुट कंटेनर है हम लोग का जो बाहर का ना, वो है we need in search input, सॉरी, मतलब इसका अंदर का, इसमें बटन में और ये, तो लाइक दिस, अभी तीनों में पैडिंग आ गया है, ठीक है। नाउ लेट अस रिमूव दिस बॉर्डर, ओके। ये बॉर्डर को हम लोग रिमूव करते हैं इनपुट का, तो अगेन इसके लिए सर्च इनपुट सेपरेट लिखना पड़ेगा, बॉर्डर नन, तो दिस बॉर्डर इज गॉन नाउ, ओके। लेकिन ये जो आ रहा है ना सिलेक्शन में जो आ रहा है, यू कैन सी, सो ये सिलेक्शन में जो ब्लैक कलर का आ रहा है ना, अच्छा नहीं लगता है दिस वन, सो हाउ कैन यू रिमूव दिस, सो इधर देखो सिलेक्शन में कुछ नहीं आ रहा है, टू रिमूव दिस ऑन फोकस, मतलब फोकस में जो ये आउटलाइन आ रहा है, दिस नॉट बॉर्डर, ओके, बॉर्डर इज डिफरेंट, बॉर्डर इज दिस वन, सो वी डिड बॉर्डर नन, दिस इज कॉल्ड आउटलाइन, ओके। ये हम लोग का आउटलाइन प्रॉपर्टी है, सिंपली यू हैव टू से आउटलाइन नन, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड आउटलाइन, व्हेन आई गिव आउटलाइन नन, इधर अभी क्लिक करने से भी नहीं आएगा, ओके। So you can note down this also, outline none, to remove the black button input ब्रो, focus. बड़ा ये वाला सेशन रिकॉर्ड करना चाहता है क्या? या रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डोंट वरी, मिल ओके। जाएगा, हाँ। तो अभी देखो, अभी फाइन फूड, हाँ, अभी पहले हम लोग अलाइनमेंट को कंट्रोल करते हैं, अभी इसको हम लोग पूरा राइट साइड में ले जाना है हम लोग को। नाउ दिस विल बी रिक्वायरिंग अ कॉन्सेप्ट, इसमें हम लोग को फ्लेक्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, फ्लेक्स चाइल्ड का, ओके, फ्लेक्स चाइल्ड। अभी क्या है मैं बताता हूँ, जब तुम लोग का फ्लेक्स आइटम्स है ना, ये अभी फ्लेक्स आइटम नहीं है अभी के लिए, बिकॉज आई हैव नॉट मेड दिस अ फ्लेक्स बॉक्स, बट इफ आई मेक दिस अ फ्लेक्स बॉक्स, ओके, इनपुट कंटेनर अगर मैं फ्लेक्स बॉक्स बना देता हूँ, डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स, देन आई कैन यूज ऑल द फ्लेक्स प्रॉपर्टीज, सो दिस विल बिकम फ्लेक्स चाइल्ड, ये फ्लेक्स आइटम हो जाएगा, ये अलग फ्लेक्स आइटम, फिर ये अलग फ्लेक्स आइटम, सो वी विल हैव 3 फ्लेक्स आइटम्स इफ वी मेक दिस डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। फिर हम लोग जस्टिफाई कंटेंट वो सब यूज कर पाएंगे, यस ऑफ कोर्स। सो ठीक है, पहले हम लोग करते हैं, तो विच वाज आवर पेरेंट एलिमेंट, दिस वन, इनपुट कंटेनर, राइट। इनपुट कंटेनर के अंदर सारा 3 एलिमेंट्स है, सो लेट अस मेक दिस डिस्प्ले फ्लेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या हो जाएगा, सारा एक रो में आ गया, और इवन देखो ये एक्स्ट्रा स्पेस भी रिमूव हो गया, अच्छा हो गया। तो ऑल आइटम्स आर फ्लोइंग इन वन रो बिकॉज बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन इज रो, सो इफ वी मेक फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, सारा नीचे आ जाएगा लाइक दिस, कॉलम आ जाएगा, स्ट्रेच हो रहा है, हाँ, ऑल्सो इट स्ट्रेचेस, डोंट फॉरगेट दैट, स्ट्रेच होता है। So flex direction column देने से ऐसा आता है, so by default let it be row, even if we don't write no problem because by default is row. Now अभी flex, ब्रो, इज द फाइंड मी एंड लोकेट मी इनसाइड द इनपुट बटन? look, if you check the HTML structure, find me locate me दो बटन है, they are inside input container div element। अच्छा। अभी input जो है text input, ये सेपरेट है, इसका हम लोग ने बॉर्डर को रिमूव कर दिया है, ओके। और हम लोग ने बॉर्डर कहाँ दिया है, div element में दिया है, div element में, डिव। हाँ हाँ। ओके। So basically it's ओके, creating an अंडरस्टैंड। illusion like this, हाँ, it feels like it's one थैंक text यू। input but it's actually it's inside a div element। सो विदाउट डूइंग दिस, वो फाइंड फूड वाला जो बटन है उसको अलाइन करने में दिक्कत हो जाएगा ना बहुत? हाँ, अभी now this thing should be far to the right, so without flex हाँ। box it will be very difficult, yes। तो अभी हम लोग का फ्लेक्स बॉक्स में फ्लेक्स चाइल्ड का कंसेप्ट था, विच वी barely touched actually, we could not do much classes on it। तो अभी इसमें तो अलग अलग प्रॉपर्टी रहता ही है, लाइक जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन देने से क्या होगा, सारा ऐसा दूर दूर जाएगा इक्वली। फिर जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स स्टार्ट होता है, फ्लेक्स स्टार्ट देने से सारा स्टार्टिंग पोजीशन में जाएगा, फ्लेक्स एंड होता है, सारा लास्ट में जाएगा लाइक दिस, ऑल द आइटम्स विल गो टुवर्ड्स द लास्ट लोकेशन। फिर सेंटर होता है, space around space evenly होता है, but none of them will work, so we don't want this, by default let it be flex start। The main property that I want to show, इसके पहले मैं कुछ border देना चाहता हूँ, हाँ, so that we can see the boundary of the elements। I want to give some border, तो सबको मैंने border दे दिया है। search input इसको मैं थोड़ा ऊपर रखता हूँ,
तो यू कैन सी दिस ब्लैक बॉर्डर्स, सबका काला काला बॉर्डर है। तो अभी क्या करता हूँ मैं, अभी फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज करता हूँ चाइल्ड में। नाउ लेट मी शो यू। अभी मैं मेरा ये क्लासेस है, हाँ, लोकेट बटन, फाइंड बटन, सर्च इनपुट, दिस आर द क्लासेस फॉर द फ्लेक्स चाइल्ड एलिमेंट्स। तो ये जो सर्च इनपुट क्लास है और लोकेट बीटीएन क्लास जो है, सपोज इन दोनों के लिए फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, फ्लेक्स प्रॉपर्टी कॉलन वन, इसमें भी फ्लेक्स कॉलन वन। इफ आई राइट लाइक दिस, व्हाट विल हैपन, दे विल टेक इक्वल स्पेस, ओके, जितना भी अवेलेबल स्पेस था उसका इक्वल इक्वल अमाउंट ले लेगा, ओके, इट्स काइंड ऑफ रेशियो। It is saying that I'll take one part, I'll also take one part, okay. So if I say search input flex 2, तो क्या होगा, ये हम लोग का दो पार्ट्स लेगा, ये हम लोग का वन पार्ट लेगा, ठीक है। बेसिकली इट्स डिवाइडिंग इनटू थ्री पार्ट्स, व्हिच मींस द एंटायर अवेलेबल स्पेस जितना है इसको छोड़ के, ओके, फाइंड फूड बटन को छोड़ के जितना अवेलेबल स्पेस है उसका ये दो हिस्सा लेगा, ये वन हिस्सा लेगा, व्हिच मींस वी विल add them up, 2 plus 1 equals to 3. We will divide this into three parts. Then this one will take two parts, this will take one part. If I make this 4, तो क्या होगा, 4 plus 1 5, which means we will divide the entire available space into five parts. So search input will take 4 parts and locate button will take one part. So we can also tell like this, ठीक है, ओके। अगर हम लोग इसको फाइंड बटन में भी लगाते हैं, लोकेट बटन, इसको अगर हम लोग फाइंड